अस्सलामुअलैकुम। आज हम क्लास 9 इंग्लिश चैप्टर 2 पैट्रियोटिज्म की कंप्लीट एक्सरसाइज करेंगे। तो पार्ट ए है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू पर्सनली डिफाइन पैट्रियोटिज्म? कैन यू प्रोवाइड एन एग्जांपल फ्रॉम योर ओन लाइफ और कम्युनिटी दैट इलस्ट्रेट्स योर डेफिनेशन? इसका आंसर है पैट्रियोटिज्म टू मी encompasses a profound sense of national pride, loyalty, and responsibility. It involves acknowledging and appreciating the history, culture, and values that define my country while actively contributing to its betterment and welfare. Question number 2 है why do you think Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah's effort were crucial in securing a separate homeland for the Muslims? इसका आंसर है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह's tireless efforts were instrumental in securing a separate homeland for Muslims. His unwavering commitment to the cause, coupled with his exceptional leadership skills, enabled him to unite the Muslim community and negotiate with the British to create Pakistan. Question number 3 है why do you think the soldiers mentioned in the text are considered heroes? What qualities do they show? इसका आंसर है the soldiers mentioned in the text are reserved as heroes due to their exemplary display of bravery, selflessness, and loyalty. By laying down their lives for their country, they demonstrated the highest form of patriotism, inspiring future generations to emulate their values. Question number 4 है how can the spirit of patriotism be mentioned and fostered in today's society, where many people are more connected globally than locally? Provide examples of modern acts of patriotism. इसका आंसर है to maintain and foster patriotism in today's globalized society. It's essential to promote cultural education, national pride, and community engagement. Modern acts of patriotism can include volunteering for local causes, participating in national events, and advocating for policies that benefit the country. Question number 5 है the text includes a quote from S.W. Scott about patriotic spirit. What do you think S.W. Scott means by a man devoid of patriotic spirit? Do you agree or disagree with this perspective? Why? इसका आंसर है S.W. Scott means that a person without patriotism is empty inside. I agree because loving our country is important. Question number 6 है how can schools teach students about patriotism? Why is it important for students to learn about it? इसका आंसर है schools can teach patriotism by telling stories of national heroes. It's essential for students to learn about patriotism to love their country. Question number 7 है can you think of a small act of patriotism that someone could do every day? How does this help the country? इसका आंसर है a small act of patriotism is respecting the national flag. It helps the country by showing love and respect. Question number 8 है what did you learn about patriotism from this text? इसका आंसर है I learned that patriotism is about loving and respecting our country. It's essential for national unity. पार्ट बी है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर ईच क्वेश्चन। यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपने इनके करेक्ट ऑप्शंस चूज करने हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है द वर्ड पेट्रियोट ओरिजिनेट्स फ्रॉम। लफ्ज पेट्रियोट किस लफ्ज से माखूज है? ऑप्शन ए ग्रीक वर्ड पेट्रियोटिकस, ऑप्शन बी लैटिन वर्ड पेट्रियोटा, ऑप्शन सी फ्रेंच वर्ड पेट्रियोट, ऑप्शन डी स्पेनिश वर्ड पेट्रियोटा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, लैटिन वर्ड पेट्रियोटा। लफ्ज पेट्रियोट लातीनी लफ्ज पेट्रियोटा से माखूज है। सेकंड स्टेटमेंट है व्हाट इज कंसीडर्ड अ कमेंडेबल क्वालिटी अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट। टेक्स्ट के मुताबिक कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो कि काबिल तारीफ है? ऑप्शन ए ब्रेवरी, ऑप्शन बी इंटेलिजेंस, ऑप्शन सी पेट्रियोटिज्म, ऑप्शन डी ऑनेस्टी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, पेट्रियोटिज्म। थर्ड स्टेटमेंट है हु लेड द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट
in their struggle for a separate homeland? किसने बरे सगीर के मुसलमानों को एक अलहदा मुल्क लेने की कोशिश की? ऑप्शन ए अलामा इकबाल, ऑप्शन बी लियाकत अली खान, ऑप्शन सी कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन डी सर सैयद अहमद खान। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। फोर्थ है, व्हाट आर द सुप्रीम वैल्यूज फॉर अ पैट्रियट अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट? टेक्स्ट के मुताबिक एक हिब्बुल वतन के लिए आला इकदार क्या है? ऑप्शन ए वेल्थ एंड पावर, ऑप्शन बी सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी एंड ऑनर, ऑप्शन सी एजुकेशन एंड नॉलेज, ऑप्शन डी फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी एंड ऑनर। फिफ्थ है, इन विच वार्स डिड मैनी ब्रेव सोल्जर्स ले डाउन देयर लाइव्स फॉर पाकिस्तान? वो कौन सी जंग है जिसमें बहुत से सोल्जर्स ने, मतलब बहुत से सिपाहियों ने पाकिस्तान के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी? ऑप्शन ए है वार्स ऑफ 1965, 1971 एंड द कारगिल वॉर, ऑप्शन बी है वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2, ऑप्शन सी है वॉर ऑफ 1857 एंड द अफगान वॉर्स, ऑप्शन डी है गल्फ वॉर एंड इराक वॉर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, wars of 1965, 1971 and the Kargil War. Part C है read the following sentences in identifying the cause and effect. आपने इन सेंटेंस को पढ़ना है जो आपको दिए गए हैं और आपने इनके वजूहात और इनके असरात लिखने हैं। पहला सेंटेंस है Patriots render sacrifice. हिब्बुल वतन अपनी जान कुर्बान कर देते हैं for the preservation and protection of the country's values. अपने मुल्क के इक़दार की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए। इसका कॉज है पैट्रियट्स लव एंड लॉयल्टी फॉर देयर कंट्री, मुहिब्बे वतन के अपने मुल्क के लिए प्यार और वफादारी, और इसका इफ़ेक्ट है प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द कंट्रीज वैल्यूज़, अपने मुल्क के इक़दार की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़। सेकेंड सेंटेंस है ड्यूरिंग द वार्स ऑफ 1965 एंड 1971। 1965 और 1971 की जंग के दौरान मैनी सोल्जर्स डिस्प्लेड ग्रेट करेज, बहुत से सिपाहियों ने अपने आला जज्बे को दिखाया। इसका कॉज है वॉर्स ऑफ 1965 एंड 1971 और इसका इफेक्ट है सोल्जर्स डिस्प्लेड ग्रेट करेज, के सिपाहियों ने अपने बुलंद हौसले और जज्बे को दिखाया। पार्ट डी है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई वेदर ईच is a fact or an opinion. आपने इन स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट फैक्ट है और कौन से ओपिनियन। पहली स्टेटमेंट है पैट्रियोटिज्म इज अ कमेंडेबल क्वालिटी, ये एक ओपिनियन है। सेकंड है मैनी सोल्जर्स वर अवॉर्डेड निशाने हैदर फॉर देयर ब्रेवरी, ये फैक्ट है। पार्ट ई है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड आइडेंटिफाई वेदर ईच इज अ जनरलाइज्ड स्टेटमेंट और एन एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन। आपको यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, आपने ये बताना है कि क्या ये जनरलाइज स्टेटमेंट है या एक एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन है। पहली स्टेटमेंट है मैनी सोल्जर्स शोड ग्रेट ब्रेवरी ड्यूरिंग द वार्स ऑफ 1965 एंड 1971, ये एक जनरलाइज स्टेटमेंट है। सेकंड है मेजर तुफैल मोहम्मद वाज अवॉर्डेड निशाने हैदर फॉर हिज ब्रेवरी इन द 1965 वॉर, ये एक एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन है। पार्ट एफ है रीड पैराग्राफ 2 ऑफ द यूनिट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पैराग्राफ नंबर 2 को दोबारा पढ़ें, जो चैप्टर का पैराग्राफ नंबर 2 है उसे दोबारा से पढ़ें और यहाँ पे मौजूद क्वेश्चंस के आंसर दें। पहली स्टेटमेंट है व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द टेक्स्ट? ऑप्शन ए पैट्रियोटिज्म इज अनइम्पोर्टेंट, ऑप्शन बी पैट्रियोटिज्म रिक्वायर्स सैक्रिफाइस, option C patriotism is only about honor, option D patriotism is about personal interests, option B is the correct option, patriotism requires sacrifice। इसी पार्ट का क्वेश्चन नंबर 2 है identify two values that are of supreme importance to a patriot according to the text। इसका आंसर है sovereignty और integrity। क्वेश्चन नंबर 3 है what do patriot do to preserve and protect these values? इसका आंसर है patriots render sacrifice to preserve and protect the values of sovereignty, integrity and honor। Question number 4 है do you think the text present a strong argument for the importance of patriotism? Why or why not? इसका आंसर है
Yes, I agree that the text present a strong argument for the importance of patriotism. और बी portion में आएगा there are clear references about the concept and features of patriotism. नेक्स्ट है जिसमें पार्ट ए है did use the inferred meanings of these words using context clues. पहला वर्ड है commendable. इसका context clue है the text describes patriotism as a commendable quality और inferred meaning है worthy of praise or admiration. सेकंड वर्ड है render. इसका context clue है patriots render sacrifice to preserve and protect values और inferred meaning है to give or provide something especially to help or support a cause. थर्ड है sacrifice. इसका context clue है patriots render sacrifice to preserve and protect values और inferred meaning है to give up something valuable or important for the benefit of something else. फोर्थ वर्ड है sovereignty. इसका context clue है the text mentions sovereignty as one of the values that patriots protect और inferred meaning है the power or authority of a country or state to govern itself. तो आज की एक्सरसाइज हमारी यहीं पर कंप्लीट होती है. आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी. अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज.